to my channel, and today we are going to learn about the database languages. Okay. Before that, let us first of all understood what we have gone through the previous lecture. Okay. What we have learned in previous lecture is what is MySQL. Okay. Definition, what is the data, okay, what is the information, how the record has been formed, okay, how the table, then after the records, how the table is being formed, okay, after that the database is being formed, okay, like that, the whole process goes on, okay, up till RDBMS in which we store the data, okay, yeah. So these are the basically what is database, what is DBMS, what is RDBMS, which we have gone through yesterday. So, and this is the basic data engineering data flow, which is very important by the way, in which first of all the raw data is been raw data we are having, in which structured or semi-structured or unstructured kind of a data it can be. Okay, and in this raw data we uh, apply some of the code or apply some of the cases so that the processing takes place. Okay, and after processing of the data, okay, in which the ETL, or mainly ETL, which is generally extract, transform, and load of a data, we get a information, okay, which is having a certain information, and so we are having a certain uh, meaning to it, okay, by which we generate a report or and use it for the analytical purpose as well. Okay, and there are different type of databases also, okay, which we have learned with, in which we are currently using a MySQL, and also we are having a PostgreSQL, Oracle, and uh, SQL Server as well. Okay, and in today's lecture we'll be learning about database languages. Okay, so क्या होता है database languages? Okay, so there are different uh, types of languages, database languages which we are having. Okay, of which mainly we are having a DDL language, okay, then we are having a DML language, okay, DPL, um, TCL, and and uh, DCL, okay. These are mainly the five languages which we are having in a database, okay, of which first one is a DDL, of which first one is a DDL, which is nothing but a data definition language. And where ये use a data definition language यानी मतलब क्या होता है कि it is used to create a structure of an object into a database. मतलब इमेजिन करो कि हमें कुछ टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए बेसिकली हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट? So to create that kind of a structure, okay, means creating a structure using some of the attributes, okay, uh, this is nothing but a DDL, okay, which is generally used for creation of a structure of object, okay, and in which the first command which we are having in a DDL is create command, okay, create command and uh, yeah, create command, in which create command is used for creation of a table. टेबल क्रिएट करने के लिए हमें create command यूज करना पड़ता है, okay. The syntax of it is as a create database practice, okay. Create database practice यानी एक okay, first of all, yeah, in the previous lecture we have learned about database, right? And what is database? Database is a particular location in which we store a data, okay, huge amount of data. So, to creation of a database practice, this is a command actually, okay? Create database practice, which is used to create a database of a name practice. And the second one is a create table name ADR, which is nothing but a attribute name, data type, integer constraint. Okay, this is basically you can go through it. Okay, you, which is very easy
विच इज वेरी इजी, और तुम भी समझ भी जाएगा, इतना हार्ड नहीं है कि मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट होने करके। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, दिस इज अ सिंटैक्स बेसिकली। ओके, हम टेबल का क्रिएट टेबल का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट करना है टेबल, से फॉर एग्जांपल एच जे। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल हमें प्रैक्टिस टेबल क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट टेबल प्रैक्टिस। ओके, जिसमें हमने डाल दिया आईडी इंट, नेम कैरेक्टर 50, सैलरी इंट, इन विच ये आईडी जो है हमारा वेरिएबल है। ओके, आईडी, नेम, सैलरी, ये हमारे वेरिएबल्स है। ओके, एंड इंटीजर, कैरेक्टर, integer is nothing but a data type. Okay, this kind of a data type we will be learning, okay, in a further lecture. But first of all, we to create a table we will be using this only. So इजी पढ़े करके अभी फिलहाल याद रख लो कि मतलब क्या यूज है करके। तो इंटीजर आईडी इज नॉट, आईडी, नेम, सैलरी आर द वेरिएबल्स, एंड आई इंट कैरेक्टर, एंड दिस इंट इज आल्सो अ डेटा टाइप। ओके, सो आईडी का इंटीजर इंट डेटा टाइप मतलब क्या, कि हम बस इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड नेम मतलब हमारा नाम रहता है, राइट। तो नाम में हमारे सब कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो वी use a data type of character in which we provide a certain size of it. Okay, it can be 50, it can be 500, okay, according to the characters which we are using. Okay, then the okay, so what happens to this query? Okay, this generally, to select the database among the multiple database, we use the command like use database name. Okay, okay, leave it. Okay, we will be okay. First of all, ये इससे क्या होगा, हमारा एक टेबल क्रिएट होगा, हमारा एक टेबल क्रिएट होगा प्रैक्टिस नाम का। ओके, जिसमें हमारे कॉलम्स रहेंगे आईडी, नेम और सैलरी। ओके, समझ गए, मतलब हमारा टेबल प्रैक्टिस नाम का टेबल रहेगा जिसमें हमारा आईडी आईडी रहेगा, नेम रहेगा और सैलरी रहेगा हमारे कॉलम्स। ओके, और ऐसा भी रहता है कि मतलब हम एक टेबल में, हम एक डेटाबेस में टेबल स्टोर करेंगे, राइट। एज ऑफ नाउ हमने प्रीवियसली भी किया था। अब ये देखिए कि ये टेबल है, और टेबल हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, राइट। सो ये सर्टेन काइंड ऑफ टेबल्स हमें डेटाबेस में स्टोर करना रहता है, करेक्ट। सो हमें डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम टेबल स्टोर करेंगे, करेक्ट। So in this we are using a database name. This is syntax in which we will be, this is a command, okay। तो हम यूज करना है कौन सा डेटाबेस, इसके लिए नाम देते, से फॉर एग्जांपल हमारा से फॉर एग्जांपल हमारा कोई तो एक डेटाबेस का नाम है, से फॉर एग्जांपल डे टू, से फॉर एग्जांपल डे टू नाम का एक कोई तो हमारे पास डेटाबेस है। तो हमें वो डेटाबेस के अंदर हमें वो टेबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे, हमें डेटाबेस का नाम देना, तो डेटाबेस का नाम क्या था, डे टू, डे टू था। तो say for and we are going to put a semicolon into it, okay, to close it. Also, yeah, that's how the we will be using a database. Okay, और ऐसा नहीं रहेगा कि हम एक ही डेटाबेस में हम टेबल स्टोर करेंगे। देयर माइट बी a different and many databases in which there might be different tables. तो एक डेटाबेस में एक टेबल रहना जरूरी नहीं है। There can be multiple tables in a particular database. Okay, example, okay, example is use practice. Okay, say for example which is given here, use practice. Okay, we want to check the structure of a data. Okay, so say for example, this is how use the
This is how we use the practice database. Okay. So suppose we want to check the structure of a table. ओके मतलब स्ट्रक्चर चेक करना है कि कैसे अ, हमारा टेबल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे DESC टेबल नेम ओके हम यूज करेंगे ये कमांड है DESC टेबल नेम ओके सो से फॉर एग्जांपल DESC हमारा टेबल नेम क्या है प्रैक्टिस दैट्स ऑल एंड सेमीकोलन दैट्स हाउ होल प्रोसेस वर्क्स ओके गॉट इट या so this is this is the first this is the create command. Okay, this is the create command which is used to create a table as well as the database. Okay, हम create command के use करके हम दो operation perform कर सकते हैं to create a table as well as to create a database. The second one which we are having is alter. Okay, ये हमारा कहाँ गया? This is the हमारा subdivision है. ये हमारा first है. Yeah, first है कि create. Second हमारा है alter. Okay, and third one is for rename. Okay, so alter में क्या करते हैं हम alter as in the name suggested we are doing some changes into it. Alter means we are doing a certain changes into the table. So used to make changes in a table. Okay, मतलब क्या होता है कि हमें certain एक टेबल बना के हो गया है हमारा and we want to make some of the changes into the table. So we use alter command. Okay, and also the most important point, not the least, okay, it is used to make changes in a table, but not the data inside the table. But not the data inside the table. जो हमारा टेबल के अंदर डेटा है वो सेफ रहेगा. We won't be making any changes into it by using the alter command, but we will be changing the structure of a data. Okay, and manipulating the structure of a data. Okay, basically. So this is to define a column. Okay, so also to define a column as a primary key, there are the syntax for it as alter table name add primary key of a column name. Okay, so हमें alter करना है table name को और उसमें हमें add करना है primary key. Okay, so primary key भी तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा रहेगा, right? So primary key is also a constraint actually. It is a constraint, okay, which we will be going through in the further lectures. Okay, just remember as of now कि alter किया ये हमारा syntax है to हमें जब एक column को हमें primary की बताना है मतलब primary की मतलब क्या होता है कि एक unique column हमें define करना है. Say for example हमारा ID हो गया. सब person की ID अलग अलग रहेगी. Each and every persons will be having a different ID by which they would be identified uniquely. Okay, so that's what the what that is what a primary key is. Okay, this is the syntax of a primary key in which we are um, altering the table in which we are adding a primary key to a particular column. Okay, say for example, uh, okay, okay, I think let's uh, let's try to understand using a workbench. Okay. So this is the workbench actually in which we are going to work on using SQL. Okay. And in which we, in this left hand side, we are having a different schemas. Okay. In which these are nothing but a practice schema. Say for example, in which this is the tables. Okay. And these are the, what, these are the databases. Okay. And in the databases, we are having a different tables. Okay. So that's how the whole process goes on. Say, for example, you want to create a schema, new schema. So right click on it, okay, create schema, give a schema name and enter. And then the new schema will be created. Okay, got it? In the schema after creation,
Okay, so for example, practice schema has been created. You will be getting a, you have to click on this, okay, first of all, okay, in which you अभी तुम्हें जिसमें क्रिएट करना है टेबल, वो डेटाबेस को सिलेक्ट करो। ओके, हमें प्रैक्टिस को सिलेक्ट किया, स्कीमा को, हमें यहाँ पे न्यू, क्रिएट अ न्यू आ रहा है, देखो, क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। सो click on this and you will be in the new blank page will be opening like this. Okay, एक ऐसा ओपन करेगा जिसमें हमें लिखना है क्वेरीज एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ओके, इन शॉर्ट। ओके, या, सो ओके, ओके, तो हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, ओके, व्हाट फॉर द क्रिएशन ऑफ टेबल, ओके, तो हमें क्रिएट टेबल करना है, फॉर एग्जांपल, ओके, और द मेन बात जो है इसमें याद रखनी है कि ये हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओके, अपर केस, लोअर केस, ओके, इट्स अप टू यू, ओके, but either use it in a upper case only, or it's in the lower case only, because as per the job standards, industry needs में जो इजीली दिखने के लिए कोड कैसा लिखा है हम यूज करते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल, द फॉर द क्रिएशन ऑफ अ टेबल, ओके, क्रिएट अ टेबल, ओके, हम टेबल करना है, क्रिएट टेबल प्रैक्टिस नाम का, ओके, सो क्रिएट टेबल practice, in which what we are having, we are having id, id as what, int, okay, then we are having a name as what, varchar, or also we can use uh, char, okay, to be more precise, character in which, say for example, 50, okay, id हो गया, name हो गया, then what also address, let's give the address, we are having, okay, let's consider both, only two of the columns which we are having. So this creation of a table which we have done, so in table create हमने कर लिया है, अभी हमें देखना है कि हम इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, राइट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, कर्सर जहाँ पे रहेगा वो ही लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर तुम्हें पूरा कोड लिख दिया है और पूरे कोड को एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके, या, सो नाउ या, लेट्स execute this, okay, just a minute, very good, okay, yeah, so create table lint, correct, okay, this is the executed without zero rows affected, okay, now we want to check what is the structure, how is the structure, okay, so what we will use, DSC and table lint, which is practice, okay, and execute it, ओके, गॉट इट। यहाँ पे हमारे पास आईडी आया, नेम आया, इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, इसमें नल वैल्यूज है, यस, नल वैल्यूज आर देयर, और डिफॉल्ट नल, ओके, सो नल वैल्यूज है यहाँ पे, और की में भी क्या है, की खाली है, ओके, एक्स्ट्रास आर आल्सो एम्प्टी। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियसली आल्सो कि हम यहाँ पे in one of the cases which we are having was a primary key, okay, कहाँ गया, Hmm, yeah, yeah, we are having a primary key written into it, okay, so primary की हम कैसे यूज करेंगे, okay, हमारा आईडी जो है वो यूनिक कॉलम रहेगा, ओके, यूनिक कॉलम है, तो यूनिक कॉलम में हमें प्राइमरी की देना पड़ेगा, या दे सकते हैं या भी नहीं भी दे सकते, लेकिन
If given, it would be useful in a further process. Okay, and primary key. Okay, now let's execute it. Okay, okay, practice is already existed. Okay, so let us take at practice one because हमने practice one का एक पहले ही टेबल बना चुके हैं एंड टेबल बनाने के बाद हम उसमें मतलब उसका स्कीमा देने के बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, हम इसमें प्राइमरी की नहीं जोड़ सकते अगर पहले से ही हमने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड वाज कि हमने इंट आईडी को इंट रखा था, प्राइमरी की ऐड नहीं किया था। सो दैट्स हाउ द होल टेबल वाज क्रिएटेड। बट इन सेकेंडली व्हेन वी were doing adding the primary key into id, it gave an error as कि table practice already exists। क्यों दिया ये? क्योंकि प्रैक्टिस में हम हमारे पास आईडी और नेम था जिसमें प्राइमरी की इंक्लूडेड नहीं था इंट में, आईडी में। ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लेट अस टेक प्रैक्टिस वन। ओके, प्रैक्टिस वन को हमें एग्जीक्यूट करना है। दूसरा टेबल बना लो। हमने प्रैक्टिस वन को रन किया and also this, oh sorry, also this। तो हमें या as you can see here, previously we were not having a key over here, okay, but we are having now key over here, and the null values are also being replaced by yes to no because की प्राइमरी की हम जब भी इंक्लूड करेंगे कोई भी इसमें कॉलम में, सो it should not contain any of the null values inside of it, inside of any particular column. So that's the whole case. Okay, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। Okay, got it? Now alter command, okay, alter table, add primary key। Okay, ये हम use करेंगे in the further lectures। Okay, you can also try it at home। Okay, to drop a primary key अगर primary key कोई column में है। Okay, yeah, in this only। Okay, so इसमें हमारे पास primary key है int में। Okay, so हम इसमें alter command कर सकते हैं। Okay, to remove the uh, primary key from the table। Okay, alter। Okay, just give me a minute। Okay, so हमारे पास क्या है कि ड्रॉप ऑफ प्राइमरी की करना है तो alter टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। ओके, alter टेबल टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है और हमें ड्रॉप करना है प्राइमरी की को। ओके, लेट्स गो। ओके, alter टेबल practice one, enter table practice one, then after that what we are having, drop primary। Okay, now execute this। This has been successfully executed। Now try to see the table। Okay, as you can see the primary key is been removed over here। Okay, primary key यहाँ पे था हमारे पास पहले लेकिन हम remove हो चुका है, करेक्ट? सो ऐसे हम alter यूज करते हैं। Okay, to rename the table। Okay, हमें अभी कोई टेबल को रीनेम करना है। ओके, alter टेबल टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल। सेम सेम जैसे हमने यूज किया था वहाँ पे एंटर करेंगे alter टेबल प्रैक्टिस वन, रीनेम टू रीनेम टू न्यू टेबल। ओके, रीनेम टू न्यू टेबल है, नया टेबल का नाम क्या रहेगा हम करेंगे वहाँ। ओके, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली, each and everyone should be getting this। Okay, and yeah, so this was the third one, and the fourth one which we are having is a drop, and the fifth one is a truncate। Okay,
So in DDL command, let me write it over here. In DDL command, we are having create, alter, drop, truncate. Okay, create, alter, drop, truncate. What else is that? Rename. Okay, create, rename, alter, drop, truncate. These are the basically five operations which are there under DDL command. Okay, so drop. So to drop the table, alter table, table name, drop column, column name. अगर हमें कोई delete करना है table permanently, we use a drop. And most of the cases we won't be using drop, okay, because as the industrial need, uh, अगर हम कोई table drop कर देते हैं तो, and which was important by mistake, we deleted the table, it would be a huge problem. Okay, so कभी भी हम use करते हैं to go through it properly if we are dropping the correct table. Okay, yeah. So ये सब syntax similar है कि enter table, table name, मतलब enter table practice, drop और drop हमें करना है name, drop drop column name. Okay, similar है practice pro. I think you will be getting it. And the truncate, which will have truncate is also used to delete the data from the table permanently, but it will not remove the structure of a table. Okay, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? ड्रॉप, ओके, ड्रॉप मतलब कि पूरा टेबल चला जाएगा, उसका स्कीमा भी चला जाएगा. बट इन ट्रंकेट it is used to delete the data, okay, from the table permanently, but will not remove the structure of a table. अगर ट्रंकेट हम कमांड जब भी यूज करेंगे तो then we will be having the structure of the table, but all the data will be deleted permanently in the truncate command. Okay, and once you run the truncate command, the data will not be recovered. हम truncate command use करने के बाद हमें recover करना है data, we won't be able to recover the data permanently. Okay, and this is the syntax. Truncate table, table name. Okay, so these are basically the five. Okay, so these are basically the five uh, commands which are under the DDL language, okay, data definition language, okay, in which we are having create, which is used to create a table, and create. Then the second one is the enter command, which is used to make changes in a table, but not the data which is inside of a table, which is used to enter मतलब हमें बस table uh, के data को छूना ही नहीं है, but we want to just make the changes in the structure of a table. Then use alter table, alter command, and then rename मतलब to use to rename the table. Okay, then drop is used to uh, delete the table permanently, and the truncate is used to delete the table permanently, but will not remove the structure of a data. Okay, structure रहेगा, but the data will be deleted permanently. Okay, that it. Yeah, and yeah, I guess that's all for today. Okay, and in this today's lecture, we learned about the TDL. In the next one, we will be learning about VMM, okay, and DQL. Okay, these are the both commands which we learn. Yeah, I guess. And if you're having any kind of a doubts, we do reach out in comments. I will be as soon as I will be getting your query, I will be trying to resolve it. Okay, if you are getting any problems, and if you are having any kind of issues as well, and if you want
any guidance in any of the topic as well, you can reach out in comments. Okay. Yeah. And thank you, I guess. Yeah. And that's the end of the lecture. Yeah. Thank you.